Hello, my dear children. Welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing SST Classic. Children, this is your book, Time Travelers, Unraveling History's Mysteries. So today we are going to start with chapter number 9 of Civics. And the name of the chapter is Law and Social Justice. So let's start with the chapter. Here you can see there's a picture in front of you. People are working somewhere and people shown in the picture are laborers. ये लोग जो है इन्हें लेबर कहा जाता है. Do you think that they get good wages for their hard work? जो ये मेहनत करते हैं क्या इन्हें इसके लिए अच्छे पैसे मिलते हैं? Discuss in the class. Also compose a poem about our Indian laborers. So this you have to do as a homework, children. Now let's start with the chapter. The government is responsible for looking after the welfare of the people. अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है हमें डिफरेंट फैसिलिटीज देती है, सो गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे वेलबींग के लिए. इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एवरी पर्सन हैज अ राइट टू इक्वालिटी. सो हमारी कंट्री में हर किसी को राइट टू इक्वालिटी दी गई है. But this right sometimes get violated as one section of the society exploits the other weaker section. ये right कब exploit किया जाता है? जब एक section दूसरे section को exploit किया जाता है तो ये right जो है violate हो जाता है, खराब हो जाता है, तोड़ दिया जाता है. The role of law is vital in implementing and ensuring social justice in society. So ये जो रोल है लॉ का ये बहुत ज़्यादा वाइटल है इम्प्लीमेंट करने में एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, जिसकी वजह से सोशल जस्टिस होता है सोसाइटी में. सो द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड वेरियस लॉज टू इंश्योर दैट देयर इज जस्टिस फॉर ऑल सेक्शंस इन द सोसाइटी. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि हर जो सेक्शन है सोसाइटी में उसे जस्टिस मिलता है. As with the law on minimum wages. So एक ऐसा ही law है minimum wages का which is meant to protect workers. Workers को protect करने के लिए बनाया गया है. There are also laws that protect the interests of producers and consumers in the market. So producers जो हैं और जो consumers हैं उनके लिए भी कुछ laws बनाए गए हैं. These laws ensure that the relation between these three parties, the worker, consumer and the producer are governed in the manner that they are not expected. So ये laws ऐसे बनाए गए हैं कि ये तीनों जो है आपस में exploit ना हो. Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals. So इन laws को बनाना, इन्हें enforce करने और uphold करना, इन सब चीज़ों से जो गवर्नमेंट है कंट्रोल कर सकती है हर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को. और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस, प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज को इंश्योर कर सकती है ताकि सोशल जस्टिस हर किसी को मिल पाए. मेनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो इसमें से ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. नाउ फॉर इंस्टेंसेस एक एग्जांपल दिया गया है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज. अब यहाँ पे एक लॉ दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो इट सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और बी अंडर बॉन्डेज. सो किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते हैं लो वेज के अंदर काम करना या फिर बॉन्डेज के अंदर. Similarly, the Constitution lays down that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or any other hazardous employment. So, किसी भी बच्चे को जो 14 ईयर से कम है वो ऐसे किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता. ये भी एक लॉ. Now, safety laws. What are the safety laws? The government ensures that safety laws are implemented properly in the country. So गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि जो सेफ्टी लॉज हैं उसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए हमारी कंट्री में.
with more industries being set up both by local and foreign businesses in India. So बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेट किया जाता है दोनों ही फॉरेन और लोकल बिजनेस में इंडिया में. There is a great need for stronger law protecting workers' right. ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए जाए जो प्रोटेक्ट करें वर्कर्स को, वर्कर्स के राइट्स को, एंड द क्लाइमेट ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉ, और ये लॉज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए. The passing of the Panchayati Raj Bill by the 73rd Amendment Act was a step to empower all the people to be equal participants in the decision making process. So ये जो पंचायती राज बिल है, ये जो है 73rd Amendment Act में पास किया गया था. ये एक स्टेप है जो एम्पावर करता है all the people to be equal participants. ये सारे पीपल को equal participants बनाता है. Decision making process. This is an act that came in effect because of the conscious and deliberate efforts on the part of the government. So ये जो लॉ बनाया गया था इसमें जो है कॉन्शियस और डिलिबरेट एफर्ट्स जो है लगाए गए थे गवर्नमेंट से, and the government required an institution which would bridge the gap between itself and the people. So गवर्नमेंट को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में गैप मेंटेन करती है, एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस मोर पार्टिसिपेटिव, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसे भी पार्टिसिपेटिव बना सके. नाउ व्हाट इज लेबर लॉ? India has a high rate of population growth as well as unemployment. So क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. सो लेबर इज वेरी इजीली अवेलेबल इन इंडिया. इंडिया में लेबर काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वेयर अनस्किल्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. सो ऐसी जगह जहाँ पे अनस्किल्ड वर्क की जरूरत है, ऐसी जगह पे लेबर बहुत इजीली मिल जाती है. द वर्क इन्वॉल्व इन दिस sector is very risky, and the people who hire these laborers have focused solely on profit. So ऐसी जगहों पे जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो लेबर जिन्हें हायर किया जाता है उनका जो मेन फोकस रहता है वो प्रॉफिट में. द सेफ्टी ऑफ द वर्कर इज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस. ऐसी जगहों पे जो सेफ्टी होता है वर्कर्स का उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द इंजर्ड इज easily replaced. एक्सीडेंट के केस में जो इंजर्ड पर्सन है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है. Moreover, the people working in this sector are often illiterate and are not informed about their rights. ऐसी जगहों पे जो लोग हैं वो illiterate होते हैं और उनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता. Therefore, they cannot even file the compensation in case of accident and malpractice. So ऐसे लोग जो है एक्सीडेंट या फिर मैल प्रैक्टिस के केस में जो है किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन फाइल नहीं कर सकते. लॉ पास बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास किए हैं. व्हाट आर दे? द फॉलोइंग आर सम लॉज पास बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस. सो लेबर्स की, इन लोगों की, इन वर्कर्स की बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज पास किए हैं जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है. नाउ द फर्स्ट वन इज मिनिमम वेज एक्ट 1948. सो 1948 में एक मिनिमम वेज एक्ट पास ऑन हुआ था. क्या था? लेट्स रीड. द मिनिमम वेज एक्ट 1948 safeguards the interest of worker by making it compulsory for the employers to pay their workers the minimum wage fixed under the act from time to time. So एक्ट के अंदर कुछ वेज फिक्स्ड है. सो उससे कम जो है वेज नहीं दे सकता कोई भी इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर. दिस एक्ट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर. और ये जो एक्ट है ये जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है. इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अंडर द एक्ट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स, रिवाइज, रिव्यू एंड इम्पोज द पेमेंट टू मिनिमम वेज. अब इस एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो
फिक्स कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और ऑल्सो एनफोर्स कर सकती है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज को वो फिक्स कर सकते हैं या रिवाइव कर सकते हैं। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। अब यहाँ पे वर्किंग आवर्स को भी जो है रेगुलेट किया जाता है, ओवर टाइम, वीकली हॉलीडेज एंड ओवर टाइम वेजेस। सो ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर आती हैं। Here you can see the people working on the Manrega project where they are assured of the minimum wage. जहाँ पे इन्हें minimum wage जो है का assurance मिलता है. Next is Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986. So 1986 में एक एक्ट निकला था जो था Child Labour Act, जिसमें प्रोहिबिट किया जाता था चाइल्ड लेबर। The Constitution of India bans the employment of children, but there are certain sectors where children are still employed. So government जो है ऐसे एक्ट को बैन करती है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये अभी भी चल रहा है। The Child Labour Act 1986 prohibits employment of children below the age of 14 at places such as factories which are considered hazardous. So ऐसी जगह पे जहाँ जो hazardous कंसिडर किया कि इस जगह पर 14 ईयर से कम के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। चिल्ड्रन को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। विच कवर्स पैसेंजर्स, गुड्स और मेल रेलवेज। दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट एट अ रेलवे स्टेशन। सो रेलवे स्टेशन के भी किसी भी कैटरिंग में उन्हें आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द फायरवर्क इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री विच डील्स विद इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। बच्चों को ऐसे फायरवर्क इंडस्ट्रीज में भी वर्क करने नहीं दिया जाता। दे कैन नॉट वर्क इन प्लास्टिक और फाइबर ग्लास वर्कशॉप और इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स एंड गैरेजेस। सो वो ऐसे प्लास्टिक और फाइबर ग्लास वर्कशॉप में भी वर्क नहीं कर सकते। So, children also cannot be employed in these workshops which make beadi, weaves carpet and deal in dyeing or in the manufacture of matches. So, बच्चों को इन सारी फैक्ट्रीज में भी वर्क करना अलाउड नहीं है। So, if anyone is caught hiring children in factories, the penalty amount to imprisonment for a term which shall not be less than 3 months and which may extend to 1 year. So अगर कोई भी पर्सन ऐसे किसी भी एक्ट में पाया जाता है, ऐसे बच्चों को एम्प्लॉय करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ जो है इम्प्रिजनमेंट बनता है। ऐसे पर्सन को 3 महीने की जेल हो सकती है और वो 1 ईयर तक भी एक्सटेंड हो सकती है। So now the next law or the act is Equal Remuneration Act 1976. So the Equal Remuneration Act 1976 came about as a way to remove gender discrimination in remuneration and wages. So gender discrimination जो है उसे जो है abolish करने के लिए act बनाया गया। This act provides for the payment of equal remuneration to men and women workers. So men हो या women हर किसी को equal wages मिलनी चाहिए, remuneration मिलना चाहिए, ये एक्ट इसके लिए बनाया गया है। And it also provides for ending discrimination against women in matter of employment. So discrimination को खत्म करने के लिए एक्ट बना है। According to the act, the basic wages of salary are and any additional emolument whatsoever payable either in cash or in kind to person employed in respect of employment or work done should be paid in full. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक वेज है या सैलरी है, उसके साथ जो डिफरेंट एमॉलमेंट्स हैं उन सबको ऐड करके जो भी पेएबल अमाउंट बनता है वो चाहे तो कैश में या फिर काइंड में जो है पे करना है उस पर्सन को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उन्हें जो है पूरी तरह से ये पेमेंट फुल में मिलनी चाहिए। Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. So this act provides protection to wife of any
female member from domestic violence by the husband or his relative. So अब इस एक्ट में जो वुमेन हैं उन्हें सेव करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया है, चाहे वो उसका हस्बैंड कर रहा हो या रिलेटिव्स। Domestic violence under the act includes actual abuse or the threat of physical, verbal, emotional and economic abuse. So domestic violence में ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप किसी को थ्रेट कर रहे हो फिजिकली, वर्बली बोल के, इमोशनली कर रहे हो या फिर इकोनॉमिकली अब्यूज कर रहे हो। हरासमेंट बाय वे ऑफ डाउरी डिमांड्स फ्रॉम द वुमेन टू हर रिलेटिव्स। सो हरासमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे तो वो डाउरी की डिमांड हो सकती है, दहेज मांगना फ्रॉम द वुमेन टू हर और हर रिलेटिव्स, वुमेन से मांगी जाए या उनसे रिलेटिव से मांगी जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। The act also provides for the women right to reside in a matrimonial or shared household. ये जो एक्ट है ये भी बताता है कि जो वुमेन है उनका राइट है कि वो अपने मैट्रिमोनियल घर में रह सकें, हाउस को शेयर कर सकें, हाउस होल्ड को शेयर कर सकें, whether or not she has any title or right in the household. भले इसका कोई टाइटल हो या ना हो, या राइट हो या ना हो हाउस होल्ड में, but she can live there. Now education, right to education act 2009. So 2009 में right to education act pass on हुआ and it is the right to of children for free and compulsory education, aimed at providing free and compulsory education to all the children of India who are at the age of 6 to 14. So 6 से 14 years के एज के जो बच्चे हैं उन्हें जो है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। According to this act, children falling within this category will have 8 years of elementary education. ऐसे बच्चों को 8 years तक elementary education free मिलनी चाहिए in an age appropriate classroom in the vicinity of his or her neighborhood. So उसके आसपास के neighborhood के जो भी schools है वहाँ पे वो free of education ले सकते हैं। The act also states that if the parents are not in a position to bear the cost of the child accessing school, it will be borne by the state, which shall have the responsibility of enrolling the child as well as ensuring attendance and the compulsion of 8 years of schooling. So ये एक्ट ये भी कहता है कि अगर जो है पेरेंट्स इस कंडीशन में नहीं है कि वो पढ़ाई की कॉस्ट को सह सके, बियर कर सके, तो ऐसे केस में जो है स्टेट जो है वो सारे खर्चों को उठाएगा एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चे को एनरोल किया जाए और उसके अटेंडेंस को इंश्योर किया जाए एंड द कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ स्कूलिंग, और 8 साल वो बच्चा अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट कर सके। अंडर दिस एक्ट नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इस एक्ट के अंदर किसी भी बच्चे का एडमिशन जो है नहीं रोका जा सकता डॉक्यूमेंट्स के लिए। नो चाइल्ड विल बी टर्न अवे ऑन अकाउंट ऑफ द एडमिशन। एडमिशन किसी भी बच्चे को जो है हटाया नहीं जा सकता है एडमिशन साइकिल से, बीइंग ओवर नॉट विथ एनी एडमिशन टेस्ट बी टेकन, और ऐसे बच्चे से कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाना। Here you can see children attending a primary school. New laws to protect the environment. अब environment को protect करने के लिए कुछ laws बने हैं। Until 1984, there were very few laws protecting the environment of India. So 1984 तक बहुत कम laws थे जो environment को protect करने के लिए बनाए गए। The environment was treated as a free entity and any industry would pollute the air. So environment को उस समय तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट समझा जाता था, कोई भी इंडस्ट्री आके उसके एयर को, वाटर को पोल्यूट कर सकती थी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो पहले जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था पोल्यूशन पे, वेदर इट वाज आवर रिवर्स, एयर और ग्राउंड वाटर, द एनवायरनमेंट वाज बीइंग पोल्यूटेड एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। सो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था और एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया जाता था।
The Bhopal gas tragedy brought the issue of the जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो ये इशू जो है काफी ज्यादा बढ़ गया of the environment to the forefront. Several thousands of people who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas that leaked from it. So ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था इस गैस प्लांट से, लेकिन उनकी लाइफ को भी इस गैस ने इफेक्ट किया. जो पॉइजनस गैस निकली थी यहाँ से, जो लीक हुई थी गैस, उसने इफेक्ट किया. This made the people realize that the existing law, though weak, only covered the individual workers and not persons who might be injured due to industrial accidents. So अब इसके बाद जो लोगों को इस बात का रियलाइज हुआ कि ये जो लॉ बने हैं ये वो काफी ज्यादा वीक हैं और ये इंडिविजुअल्स को कवर नहीं करते और ना ही वो पर्सन जो इससे इफेक्ट होते हैं. In response to pressure from environmental activities and others in the year following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. So इस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू लॉज बनाए एनवायरनमेंट पे. Henceforth the polluter was to be held accountable for the damage done to the environment. So जो पॉल्यूटर था जिसने पॉल्यूशन फैलाया था उसे जो है अकाउंटेबल समझा गया इस डैमेज के लिए. एनवायरनमेंट को जिसने डैमेज पहुंचाया है, द एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर. एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो लोग अलग अलग जनरेशन के लोग आएंगे और वो इसे शेयर करेंगे. एंड इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. और इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम खराब नहीं कर सकते. Environment Protection Act 1986. The EPA, which means Environment Protection Act 1986, came into force soon after the Bhopal gas tragedy. So इस ट्रेजेडी के बाद जो है ये एक्ट एकदम से पास ऑन हुआ and the act empowers the central government to undertake all the measures necessary for protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and reducing the environmental pollution. So अब इस एक्ट में जो गवर्नमेंट थी उसने जो है हेल्प किया, रिड्यूस किया एनवायरमेंटल पोल्यूशन को और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए. The central government is also authorized to make rules for carrying out the purpose of this act. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स बनाए कि ये एक्ट प्रॉपर्ली आगे बढ़े. अब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए. द गवर्नमेंट पीरियडिकली एनैक्ट्स लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. और गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग लॉज को पास करती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. यूज ऑफ प्लास्टिक इज बैन्ड बाय लॉ in many parts of the country. So प्लास्टिक के यूज को जो है बैन कर दिया गया है काफी सारे जगहों में कंट्री के. स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज आल्सो बैन. और पब्लिक प्लेसेस में भी स्मोकिंग को बैन कर दिया गया है काफी सारी जगहों में. Now let's revise, children, what we have learned in this chapter. The preamble of our constitution mentions social justice as our primary goal. The role of law is important in implementing and ensuring social justice in India. The government controls the activities of individuals and private companies to ensure that no individual is exploited. Now, let's answer these questions. What do many government schemes and policies aim to achieve? So बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिसीज हैं, उनका क्या एम है. एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ द लॉ दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर. इस चैप्टर में जो लॉ डिस्कस किए गए उनका क्या बेसिस है. व्हाट डू यू नो अबाउट चाइल्ड लेबर एक्ट 1986? Mention some places where children cannot be employed. Why does the government frame laws? So children, answer these questions. Now let's move on to answer in detail.
Why is the role of the law vital in ensuring social justice in India? Why is labor easily available in India? So, labor is easily available in India because of the high growing population of India. Employment is prevailing day by day, and because of this, the people who are easily available as laborers in India. How can it be said that the Equal Remuneration Act is against gender discrimination? कैसे इस बात को आप बता सकते हैं कि जो Equal Remuneration Act है वो gender discrimination के against है. What does the right to education cover? The right to education का क्या मतलब है? Why have laws been made for the protection of environment? Environment के protection के लिए laws क्यों बनाए? So children, you have to answer these questions on your own and read the chapter again so that you can easily answer the question. And I hope that you have understood the chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.